So hello everyone. Today we are going to study a very important part of Unit 3, that is different types of fluid flow. But before we study different types of fluid flow, it is very important to understand a very basic concept of Lagrangian and Eulerian method of study. Okay, so in the Lagrangian and Eulerian method, the basic is the idea behind both of these concepts. They all fall under a single category of dynamics of fluid flow. Now, dynamics of fluid flow deals with the motion of fluid along with the reason behind the motion. When we study the reason behind the motion, which is more mainly force, any type of force, when we are studying these forces, this kind of study is known as dynamics of fluid flow. Now, if we have a fluid flowing in this direction as is shown in this figure, we take hold of a particle and we start studying the motion of the particle like this. How this particle is moving in what direction, with what velocity and all. Then this approach is known as the Lagrangian method. This is a very difficult approach and practically it is very difficult to study a single particle. On the other hand, another scientist gave this Eulerian approach. It was given by this scientist called Euler. Like Lagrangian method was given by scientist named Lagrange's. Eulerian method gives a more easier way to study the fluid flow. In this method, if fluid is flowing in any particular direction in a channel or a flume, then what we do is mostly a single section is considered. After considering this single section, suppose this section is 1, 1. Now we place all our sensors on this section and then we try to take record of different parameters, different readings at different times. All these readings can be quantities like velocity, pressure, density of fluid, and acceleration, other important quantities. So this is another approach to study the reason behind the flow of fluid, which is the Eulerian method. And all common approaches which we'll be studying now for studying dynamics of fluid flow are based on the Eulerian method. Okay. Now, one of the most important topics of fluid mechanics is types of fluid flow. आप लोगों ने बहुत सारे टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़े होंगे और बुक्स में बहुत पढ़ा होगा, बट कई बार हमें ये फ्लूइड फ्लो के टाइप्स बहुत कंफ्यूज करते हैं और बच्चे जनरली सिर्फ डेफिनेशन याद करके छोड़ देते हैं. But here today we are going to study the important concepts involved with the types of fluid flow. The first and the most common type of fluid flow is steady and unsteady flow. You'll find a lot of content on the web which indicates or gives different images, figures, and videos for steady and unsteady flow. So here I am explaining the major concept. Okay. Now, for example, if this is a channel or a flume or a pipe in which fluid is flowing in this particular direction, I have taken a pre-section for study of fluid in all these in this particular direction. This is section 1, this is section 2, and this is section 3. Now, at different time of the day and the night, I am recording certain parameters. Say for example, एक parameter मैं record कर रही हूँ velocity, and another parameter that I am recording is density of the fluid which is flowing inside this pipeline. The first reading that I take it as morning 8 o'clock. Another reading was taken at 9 o'clock. I observed that at both the times, the velocity came out to be 2 meters per second and the density came out to be 980 at section 1 also, 2 also, and 3 also. This can be measured using sensors, or if you want to find out the pressure difference, one can use manometers, and many such options are available nowadays. Then another reading I took up at afternoon 12 o'clock. Again, the speed or the velocity of the fluid was 2 meters per second and density was 980 meters per second. इस तरह से मैं और रीडिंग लेती गई और रात में 9 बजे में मैंने रीडिंग ली, तब भी मुझे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और डेंसिटी 980 ही मुझे मिली. दिस इज रिलेटिव डेंसिटी, सो दिस इज नो यूनिट, और मुझे यही मिली.
So इसका मतलब the parameters of the fluid are not changing with respect to time. समय के साथ साथ इस फ्लूइड के पैरामीटर्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. वेलोसिटी वही है, डेंसिटी भी वही है, मैं किसी भी टाइम पे देखूं. ऐसे स्टडी को कहा, ऐसे फ्लो को कहा जाता है स्टेडी फ्लो. ओके, यानी कि समय के साथ साथ जब फ्लूइड के पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे हैं, when fluid characteristics like velocity, pressure, density, etc. remain constant with time, that type of flow is known as steady flow. तो थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको अगर हम देखें तो जब कोई क्वांटिटी समय के साथ चेंज नहीं होती है तो उसका डिफरेंशिएशन विद टाइम जीरो होता है, बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग और चेंजिंग विद टाइम. सो हियर we have del v by del t at any of the planes, say x axis, y axis और z axis is zero, किसी भी डायरेक्शन में. यानी कि फ्लो अगर ऐसा हो, फ्लो अगर वर्टिकली भी हो, या फ्लो अगर बाहर की तरफ स्क्रीन से बाहर भी आ रहा हो, लैटरल फ्लो भी हो, किसी भी डायरेक्शन में अगर हमारे पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू v इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा है. Pressure is also not changing, density is also not changing. If these parameters are not changing with time, then it is known as steady flow. And if they are changing with time, then inka differentiation with respect to time will not be zero. It will be some quantity that is unsteady. Next is uniform and non-uniform. अब ये steady, uniform, unsteady, non-uniform सुनने में एक जैसा लगता है, ये वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है. स्टेडी एंड अनस्टेडी हमने देखा था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, स्टेडी एंड अनस्टेडी इज एसोसिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसी तरह से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इज एसोसिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस और डिस्टेंस. Space or distance. Now, for example, if I have three sections in this fluid flow, which is flowing in x direction, a section at 1, section 2 and section 3. अब मैंने सेक्शन 1 पर देखा था फ्लूइड की वेलोसिटी थी से 2 मीटर पर सेकेंड. फिर सेक्शन 2 पे जो सेंसर लगाया उसने हमें बताया कि फ्लूइड की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और सेक्शन 3 पर जो सेंसर लगाया उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब स्पेस के साथ साथ या डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है. अगर मेरे पैरामीटर्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहे हैं तो उसे मैं कहूंगी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. And if my parameters are not changing with respect to space, so unka differentiation with respect to space is zero, and such type of flow is called uniform. Okay, so I hope ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके साथ बहुत क्लियर है. अब ये जो फ्लो है, अगर ये इस डायरेक्शन में हमने x डायरेक्शन में नापा है और देयर इज चेंज इन वेलोसिटी और प्रेशर और डेंसिटी, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा. और अगर पूरे पाइप की विड्थ में भी हम नाप रहे हैं, एक रीडिंग हमने अपर हाफ में ली, एक रीडिंग हमने लोअर हाफ में ली, एक रीडिंग हमने सेंटर में ली, उसके बाद भी अगर पैरामीटर्स में चेंज आ रहे हैं, दैट टू कम्स अंडर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो in any direction, x, y or z. Okay, so hope both these steady and unsteady flow and uniform non-uniform flow के concept आपको clear हो गए हैं. And stay tuned for many more lectures. Please like, subscribe and share.